Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Wholesale price base inflation eases to an 18-month low of 10.7% in September this year. Domestic stocks log gains of more than 1%. Sensex closes above 57,900 points. Nifty settles near 17,200 level. Then Brent crude oil price falls to trade around $92.50 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में सितंबर के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरावट से 18 महीनों के निचले स्तर 10.7% पर दर्ज हुई। घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 57,900 और निफ्टी 17,200 के स्तर पर दर्ज हुआ और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से लगभग $92.50 प्रति बैरल के स्तर पर रहे। सितंबर माह में के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरावट से 18 महीनों के निचले स्तर 10.7% पर दर्ज हुई। अगस्त के दौरान थोक महंगाई दर 12.41% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आज आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण थोक मुद्रास्फीति में कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति पर आधारित थोक महंगाई दर इस वर्ष अगस्त के 9.93% के मुकाबले सितंबर में घटकर 8.08% पर आ गई। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने गिरावट का दौर रहा, हालांकि यह पिछले 18 महीनों के दोहरे अंकों में बनी हुई है। पुनीत, क्या बहुत राहत भरी खबर मानी जाए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक के मूल्य सूचकांक पर आधारित जो इन्फ्लेशन है उसमें लगातार चौथे महीने गिरावट है और यह तकरीबन 1.5 साल में सबसे कम स्तर पर आ गई है? बिल्कुल अमित, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर है और जैसे आपने बताया कि होलसेल प्राइस पिछले 4 महीने से लगातार गिर रहा है और यदि उसको हम मंथ ऑन मंथ भी देखें तो उसमें भी हम गिरावट देख रहे हैं। आपने जो आंकड़े दिए हैं ये ईयर ऑन ईयर, यानी अगर पिछले साल से हम जब उसको मिलाते हैं तो हम उसको 10.7% आप उसको आंक रहे हैं जो फिगर्स आई हैं। लेकिन अगर पिछले महीने से हम होलसेल प्राइसेस को देखें तो पिछले महीने से इस महीने गिरावट आई है। तो इन्फ्लेशन इनफैक्ट नेगेटिव है अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो। मुझे लगता है ये और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं, क्योंकि देखिए ये इसमें खासतौर से खाने की सामान जो खाद्य वस्तुएं हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसका इंक्लूजन होता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो वेटेज है WPI में वो 64% है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ खाने की या फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही ये कम नहीं आया है। ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वहां भी हमने गिरावट देखी है, पहली बात। दूसरा ये कि जब ये फैक्ट्री गेट के प्राइसेस होते हैं, यानी जब फैक्ट्री से जो बनकर सामान आ रहा है उसकी कीमतें कम आ रही हैं, तो ये एक नेचुरल कंक्लूजन है कि आने वाले 1 या 2 महीने में जो कंज्यूमर के लेवल पर यानी रिटेल लेवल पर जो प्राइसेस होंगी उसमें भी हम गिरावट देखना शुरू करेंगे। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसके मिनट्स आए हैं और उसमें डॉक्टर वर्मा जो एक मेंबर है MPC के, उन्होंने कहा है ये बात कि देखिए हमें अब रिजर्व बैंक को इंतजार करना चाहिए थोड़े दिन के लिए कि वो देखें कि उनकी पॉलिसी से क्या असर आ रहा है और यदि आगे इन्फ्लेशन कम आता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये एक मेंबर है वो, उनका ऐसा सोच है। मुझे लगता है पूरी पॉलिसी आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंस होगी। अब क्या ये माना जाए कि जो ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का दौर था उसमें कुछ अगर दौर गिरावट तो ना भी हो तो कम से कम यही दरें फिर आगे के दौर के लिए बनी रहें?
नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक कहना है आप, लेकिन मेरा मानना है कि जो रेट्स हैं ये गिरेंगे, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो सभी नीचे हैं और उनका ट्रेंड जो है वो नीचे का है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे मैंने पहले कहा, वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी पिछले दिनों क्या रेट रहे उसको लेके है, और WPI हमें आने वाले टाइम का कुछ संकेत करता है। तो मैं इस ओपिनियन होल्ड करता हूं कि आने वाले टाइम में प्राइसेस में कमी देखेंगे। अच्छा पुनीत, एक चीज और, अभी चूंकि हमने पिछले हफ्ते या 10 दिन में हमने काफी भारी बारिश का दौर भी देखा है भारत में, खासतौर पे उत्तर भारत में और देश के काफी बड़े भूभागों में, तो उसकी वजह से भी अगर सिर्फ हम खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो क्या क्षणिक तौर पे या अल्पकालिक दौर पे ऐसा नहीं लगता कि उसकी वजह का भी महंगाई की दरों पर, खासतौर पे खाद्य मुद्रास्फीति पर उसका असर पड़ सकता है? हाँ, देखिए अभी जो हमने लास्ट जो अभी सितंबर का डेटा हमारे पास आया 2 दिन पहले, उसमें फूड इन्फ्लेशन बढ़कर आया था, और उसका खास कारण था कि जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, क्योंकि वेजिटेबल बहुत शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट होता है, तो वेजिटेबल प्राइसेस बढ़कर आई थी, और वो खासतौर से जो आपने कहा कि बाढ़ का या बारिशों का असर होता है, तो उससे वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, राइस है, व्हीट है, इसकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये अनुमान है कि आने वाले समय में हम फूड प्राइसेस में भी कमी देखेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी हम इन्फ्लेशन में काफी कमी देखेंगे। Puneet, you mentioned about vegetable prices. They had spiked to almost 40% in September, up from 22.29% a month ago, according to this data point. Right now, food articles are at 11.03% in September. Why is it that the CPI, the Consumer Price Index, is at 7.41% for September, and the wholesale price index for the month of September is at 10.7%. Why is it that the CPI is lower than the wholesale price index? No, see, CPI includes many more items which a WPI does not include. For example, in CPI you will take into account house rents, housing prices, but the WPI index does not take into account housing prices or rental prices, and there are many other items. For example, cars of course are included in WPI, but there are many items which are services which are consumed. For example, health services, they are not included in WPI, because WPI is largely food and manufactured goods, like I said earlier. So that is the reason that these prices are different, and therefore CPI is usually lower than WPI. At times in the past it has been higher than WPI for many years. So there is no relation, but a certain basket of goods we can predict what will be the price trends in future. How important has this recent spate of monsoon been for agriculture, and will that lead to food articles being priced lower, both at the wholesale and the retail level? Yes, I think so. I think when we have the next harvest after winter, I think food prices will come down. There was a concern in India because of uneven rains and floods and drought in many states. Food production may come down by 7 to 8%. But I think the latest estimates from government show that food production could be same as last year, which is very good because we had a surplus production last year also. So I think food prices will be under control in India, definitely. You mentioned about the main contributor to the wholesale price index being the commodities that go into manufacturing. That is at 11.8%. How do you see businesses dealing with this current figure, and what does this mean for consumption? So, in fact, even within that space, that when we talk about commodities, if you look at commodities like crude oil prices, energy prices, they're up by about 32% year on year. The figure you are giving is year on year, but actually these prices are not going up anymore. They're kind of stabilizing at current levels. So when I look at figures compared to last year, I see them at very high figures, 11%, 12%. But when I look at the recent trends, I say that there is no inflation which is accelerating. So that is, I think, one of the things that we have to bear in mind when we look at the constituents of this index. And that is one of the reasons I believe that inflation will cool off in months to come. नफरलाल से शेयर बाजार पर वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.2% की बढ़त से 685 अंक उछलकर 57,920 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की तेजी से 171 अंक बढ़कर 17,186 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.1% का मामूली नुकसान रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक
पूर्व स्तर पर बरकरार रहा। Sensex and Nifty today climbed more than 1%. Both stock indices rose amid positive cues from the global share market. Sensex closed near 57,900 level, while Nifty settled near 17,200 points. Sensex gained 685 points, 1.2% to finish at 57,920. Nifty also appreciated by 171 points or 1.01% to end at 17,186. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined 0.13% and the small-cap index ended flat. In the Sensex pack, 20 companies posted gains while 10 logged losses. Infosys surged 3.8% and HDFC Bank climbed 3.4%. HDFC gained 2.7% and HCL added 2.1%. On the other hand, Mahindra and Mahindra lost the most as it declined 1.4%, followed by Asian Paints, which fell 0.8%. Power Grid declined 0.6% and Reliance slipped 0.5%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 sectors logged gains while 9 logged losses. IT and BankX, both sectors gained 1.7% each. Financial and tech sectors added 1.6% each. On the other side, power and utilities, both sectors lost 1.3% each. Oil and gas declined 1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,743 companies gained, while 1,711 companies fell. Shares of 139 companies remain unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 1 पैसे की मामूली गिरावट से 82.36 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स 0.6% की बढ़त से 113.1 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, शेयर बाजार से काफी बेहतर और उत्साहजनक खबरें हैं। ये कितना मानेंगे कि ये अल्पकालिक है या ये अभी शेयर बाजार में जो तेजी है ये त्योहारी सीजन में स्थायी भाव बना पाएगी और निरंतर अब बाजार ऊंचाई की ओर चलता चला जाएगा? देखिए अमित, ये निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को तो ये उम्मीद रहती है कि बाजार की जो माहौल है या जो गति है वो हमेशा ऊपर रहे, अच्छा रहे। हालांकि मुझे लगता है कि जो आज का बाजार था वो बड़ा डिफरेंट बाजार था। आज हमने देखा कि जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं यानी निफ्टी और सेंसेक्स, वहां पर काफी तेजी थी क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे आज उसके अंदर काफी बाइंग थी, शॉर्ट कवरिंग भी थी मैं कहूंगा, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से वहां पर बाइंग भी नहीं थी और वहां हमने देखा कि वहां गिरावट भी आई थोड़ी सी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का बाजार थोड़ा सा डिफरेंट बाजार था। जो नॉर्मल ट्रेंड हमने देखा है पीछे, इसकी सेलिंग रही है करीब 1100 करोड़ रुपए की और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बाइंग रही है आज 1600 करोड़ की। तो कुल मिलाकर यदि बाजार इन लेवल्स पर स्टेबलाइज करता है और ये इंडेक्स जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं वो स्टेबलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ से बेहतर लेवल देखेंगे। और हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ है यानी नवंबर ऑनवर्ड्स बाजारों की जो स्थिति है वो और बेहतर होगी क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वो और इम्प्रूव होगा। जी पुनीत, मैं यही आपसे भी जानना चाह रहा था क्योंकि दूसरी तिमाही के अब नतीजे कुछ ही दिनों में शुरुआत हो जाएंगे। पहली बात वो, दूसरा हमारा त्योहार के बाद और अब तकरीबन महंगाई के स्तर पे भी जो राहत भरी खबरें आ रही हैं, इसका कितना सकारात्मक असर बाजार पे पड़ता नजर आ रहा है और यह असर कितनी तेजी की ओर बाजार को ले जाएगा? देखिए अमित, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि खबरें काफी मिक्स्ड रहेंगी, ऐसा हमारा अनुमान है क्योंकि हालांकि इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे कंपनीज के, कुछ क्षेत्र में वो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। हमने आज कई कंपनियों के रिजल्ट्स आए जो बैंकिंग क्षेत्र से वो आज बहुत अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर थे, लेकिन कमोडिटीज क्षेत्र से यानी सीमेंट के क्षेत्र से एक बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया, वो उम्मीद से नीचे था काफी। तो मुझे लगता है और आने वाले टाइम में जो स्टील कंपनीज हैं वहां पर हमें, कमोडिटी कंपनीज हैं वहां हमें लगता है कि थोड़े सेटबैक लगेंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं या आईटी कंपनीज जिनका अभी तक रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उम्मीद से बेहतर आए हैं। तो ये मिक्स्ड बैग होगा एज फार एज इकोनॉमिक रिजल्ट है कंसर्न। साथ में जो इकोनॉमिक न्यूज है वो कुछ बेहतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में आप ये मिक्स्ड एक ट्रेंड जरूर देखेंगे। Puneet, you mentioned about IT and financials. Both went up marginally by 171 points in their respective Nifty index. Is that because of the central bank policy on interest rates and on the exchange rate of the rupee to the dollar right now? So, to some extent, you are right. See, what has happened is that rupee has now depreciated to about 82, 83 level,
and which has given, because most of the IT companies are exporting their services and they earn in dollars, therefore the rupee revenues have gone up. And in fact, Infosys has increased the revenue guidance to 16 to 18% growth because of the depreciated rupee. So their profits in rupee terms have gone up, and they are benefiting from it because they're export-oriented companies. However, I think the prices today went up largely because of recovery in the US markets, which is a very strong rebound there. And secondly, I think the valuations of IT companies have become very, very attractive. Infosys came out with a buyback. Markets did not react to it yesterday, but today Infosys was among the top gainers. So I think the market is kind of recognizing the value in IT companies and the stability of their revenues and profits. And I think that is why they went up. So the buyback basically represents the cash reserve of the company, the capacity to buy it at a specific price from the market itself. So they're sitting on a lot of cash right now. What kind of we know what the revenue guidance is, what the year-on-year earnings are on comparison. What about employment? What about hirings? What kind of confidence are they creating in the market on the macro level? So two things. One, you have raised this issue about cash reserves in IT companies. Let us take an example of a company like Infosys. It earns roughly like 25 to 26,000 crores per year cash. And therefore, a part of it distributes as dividend to the shareholders, and almost 10,000 crores it has now declared as a buyback. So clearly, these companies earn that much. In fact, TCS earns almost 40,000 crore rupees every year. That is the amount of cash that they generate. So you can imagine the kind of profits they're generating, and they're generating stability of the businesses. On the issue of hiring, I think there was a huge run-up in employee costs, actually. If you look at the last quarters, the salaries had gone up, and they had gone up to unsustainable levels. They are coming down to some extent. Hirings have slowed down in IT. In fact, they have said, all the companies are saying that the quarterly attrition is now down, and I think this should stabilize going forward, because very, very high salaries also hurt the prospects of the companies. We also saw the Bank Nifty go up almost as much as the Nifty Financial Services Index. What does the central bank policy right now hold for valuation in bank and financial services? So we have some news coming out about some opposition, dissent against the MPC recommending a raise of the repo rate by another set of basis points. So one thing is quite clear, that as central bank has raised interest rates by about 2% in last 6 months. So we are now a repo rate of about 6%. It was approximately 4% 5-6 months back. And that has benefited banks in terms of their net interest margins, because even though interest rates have gone up, the credit growth has been quite robust, in fact. So banks are benefiting from higher rates as well as increased credit offtake. And the other point that you mentioned, that again in the MPC, now there is a certain quarter with RBI should not aggressively raise rates, because they have done enough to bring inflation under control, and any further increase in interest rates will hurt growth. So I think I also stand in the same camp. I believe RBI has done very well so far, but they should not be an overkill on interest rates, and therefore hurt the economic prospects and employment, which is very important. So hopefully they will heed to it. Analyzing on a technical level, what's the VIX level like for you? 18.26. What does that tell you about the market? Very briefly, before we head for a short break. So 18 in India is okay. In fact, historically we have had between 16, 17 and 20. And in times of crisis, we have seen VIX go up to 25, 30 also. So I think 18 is pretty okay. It shows that there is no fear. Like VIX is known as a fear index. If there's high fear, then VIX goes up. So it's quite stable right now. आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, रुपए के बारे में अगर बात करें कि रुपए की जो कीमत है वो तकरीबन $82.5 के मुकाबले आ चुकी है।
रुपये में कितना दबाव मानते हैं इसको, या ये एक वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें रुपए का ये एक वास्तविक स्तर आपके हिसाब से है? देखिए अमित, इस वक्त जो रूपी, और सिर्फ इंडियन रूपी, सभी करेंसीज दुनिया में जो बड़ी करेंसीज हैं, पाउंड है, यूरो है, येन है, ये सभी बहुत दबाव फेस कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन डॉलर में बहुत मजबूती आ रही है। डॉलर इंडेक्स, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो वहां पर ज्यादा डिमांड आ रही है और डॉलर वहां जा रहा है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सभी करेंसीज प्रेशर में है। मुझे लगता है भारत में जो इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करें रूपी को चाइनीज करेंसी के साथ, तो हमारी जो गिरावट आई है वो बहुत कम आई है। चाइना में करेंसी 7.25 से भी ऊपर चली गई है। तो आप देखिए प्रेशर तो है, और ये एक ग्लोबल फैक्टर है। इसमें डोमेस्टिक कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले नहीं कर रहे, ये तो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी प्रेशर बना हुआ है रूपी पे। और यदि इस लेवल पर ये स्टेबलाइज होता है, जो मेरा अपना पर्सनल एस्टिमेट यही है कि यहाँ पर अब रूपी स्टेबलाइज होना चाहिए, शायद थोड़ा सा एप्रिशिएट भी हो अगले एक साल में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो सही है, उसमें कोई बहुत नुकसान नहीं है, लुकिंग टू दी अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी के असर से शेयर बाजार में भी आज तेजी का दौर रहा। जापान का निक्केई 3.3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.3% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.8% की बढ़त से बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 1.1% से 1.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, briefly, what's your take on China and the politics in China impacting China's growth economically, and what does this mean for the future? So clearly, I think it's a very, very complex subject, Arjun. But my own estimate, from what I can read and what I can see, is China's politics is hurting its economy significantly right now. I don't think Xi Jinping had really counted on that. He thought that Chinese economy will withstand the global pressures, but you can clearly see that China's growth has gone down a lot, and China's standing in the world economy has gone down a lot, and I think that is really hurting the prospects. So if you ask me, China's politics is hurting its economy very significantly, and it will have ramifications sooner or later. IMF has also recommended that moving out manufacturing from China is not recommended in order to curb recession, which they're projecting for 2023. What are your views about that? See, Arjun, in any case, you can't replace manufacturing factories in months, even in a few years. I mean, it has taken almost 30 years for the West to industrialize China, actually. They started in the 80s, and for the first 10, 20 years, they just kept building blocks, and then they accelerated in the last 30, 40 years. So you can't replace those factories overnight with some other base, but it is quite clear that the West is no longer promoting manufacturing in China, and over the next 5 or 10 years or 15 years, I think India and other countries will become viable alternatives to manufacturing in China. Well, let's have a look at what the U.S. market has for us. Wall Street stock indices closed sharply higher yesterday. The three major U.S. indices gained as investors poured back into riskier bets after digesting a red-hot U.S. inflation reading that fueled bets for a big Fed Reserve rate hike next month. The Dow Jones Industrial Average Index surged 2.8%, S&P 500 climbed 2.6%, and the Nasdaq Composite Index rose 2.2%. Puneet, the story is telling us that they're already factoring in the rise in the discount rate by the Fed Reserve by the end of this financial year. And that has not in any way dented the current sentiment in the market, which is that all the stock indices have gone up, S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones. Why is that the case? That was my question also in the afternoon. So, Arjun, interestingly, the news on the inflation front was very bad actually yesterday. And at one point after opening, Dow Jones had gone down by 600 points. And then it rebounded. But from minus 600, it went to plus 800. So you can imagine how much excessive selling or short selling in this market was there. And there was short covering yesterday. Now, what we need to see going forward is whether stabilize at these levels. Sometimes whenever we see this kind of rebounds, they are usually technical rebounds or short-term rebounds, and selling can resume later on. But it is quite clear that we are near the bottom. When you see an adverse news and the markets go up very sharply, it tells you that the short-term bottom is in place,
we may we may oscillate around it for a little while, but I think the short-term bottom for the market is around this level. We're also seeing a drop in commodity prices, including precious metals in the U.S., and that's quite a sharp fall in prices. If you look at gold, if you look at silver, if you look at other commodities like copper, why is it that that is happening? Is there speculation right now in the commodities market in the U.S.? So there are two things happening. One is, of course, this is a technical thing that all these commodities move inversely to the US dollar. Whenever dollar appreciates, the investment money goes into dollars and it sells commodities. So we see short-term falls in commodity prices like gold and other metals that you mentioned. The other explanation could be that in the long term, the market expects a recession to hit the US economy. And a lot of people believe that next year we are going to see a recession in US economy. And that is why longer-term commodities like copper, which are industrial commodities, they have come down because they are anticipating the decline in demand. So I think both these factors are responsible right now for this trend. Well, let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices today declined more than 2%. Crude prices fell amid a fear of global recession and weak oil demand outweighing support from a large cut to the OPEC plus supply target. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.65 per barrel, while WTI crude prices were at $87.10 per barrel. Consumption going down. What does it say about the spot prices and the futures prices, especially with OPEC plus targeting $100 per barrel? What does this mean for inflation? What does this mean for consumption? So we've seen this, no? I mean, countries try to develop cartels and then they try to rig up prices by manipulating production. But in the long term, we all know that fundamentals win. And I think OPEC is doing enormous harm to itself by killing demand and consumption for its products. And in the longer term, I have no doubt that oil will go down significantly in the next 2 to 3 years. Shorter term, of course, they are trying to manipulate it by manipulating production. But I think long term, oil prices have very little room to go higher. I think they'll go lower. Puneet, our questions have always been focused on what the producer action is going to be and what would be the consumption if prices go up in terms of supplies, and what would be the impact on the fiscal deficit of the economy. What is the state of the economy of these oil-producing countries like Saudi Arabia, which is the world's largest producer of oil? Russia, we already know, is under stress. But what about Saudi Arabia and all the other OPEC plus members? See, the interesting thing about oil countries is that because their entire financing of the government is because of oil prices, so they need to keep oil prices higher to be able to raise money. For example, we know that Saudi Arabia says that they need oil prices to be higher than $60 per barrel to balance the budget. Similarly, Russia also needs to balance its budget by keeping oil prices higher, which has led them to create this cartel. That is one side of the equation. The other side is that if there is no demand, if they're not able to sell sufficient number of barrels, then they can't raise that money, even if they raise the prices. So I think at some point of time, this cartel will break down. We have seen that happen in the 70s. It happened, and then prices went down from $40 a barrel at that time to about $10-12 a barrel. So I think something similar will happen in the near future. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 325 रुपए की गिरावट से 50,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 710 रुपए के नुकसान से 56,530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,665.20 प्रति औंस और चांदी $18.65 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में, अगर सोना तकरीबन हमने 2000 का लेवल देखा था, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, तकरीबन $1,700 के आसपास आ गया है। सोना अब कितना सोना रह गया या कितना सुनहला रूप इसका भी नजर आता है, क्योंकि भारतीयों में सोने के प्रति जो लगाव है वो स्वाभाविक है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और देखिए, सोने का जो कीमत है 50,000 रुपए के आसपास जो चल रहा है, वो एक अट्रैक्टिव लेवल है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे लगता है कि इसके नीचे ये लेवल नहीं जाएगा। चांदी भी जो काफी नीचे आई थी, वहां से रिबाउंड हुआ, फिर वो नीचे आ गई है। बट मुझे लगता है ये लेवल जो है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए भी अच्छे हैं, और भारतीय कंज्यूमर्स तो आप जानते ही हैं कि बहुत अट्रैक्टिव रहते ही हैं गोल्ड और सिल्वर से। जी पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
सितंबर के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरावट से 18 महीनों के निचले स्तर 10.7% पर दर्ज हुई। घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 57,900 और निफ्टी 17,200 के स्तर पर दर्ज हुआ और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से लगभग $92.50 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.